Hi everybody, welcome back to my channel, and today we are going to cover our next topic, which is Lagrange multipliers. In my previous video I have covered up to the unconstrained optimization, and इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं methods for constrained optimization. As I have explained you already the difference between unconstrained and constrained optimization, what is optimization and what are its various benefits, advantages, application. And in the constraint optimization, basically it focused on the finding of the best solution to a problem while paying more attention towards a specific restriction or limitations. इसमें हमारे पास limitations आ जाती हैं because in the unconstrained optimization we were having no constraints, we were having no range, but in the constrained optimization we are having certain ranges जिनके अंदर ही हमें हमारा solution find करना होता है for a function, right? So in this video we'll be covering the methods for constrained optimization, one of which is Lagrange multipliers. Okay, so without any further ado, let's just start our video. So in the basic, what is Lagrange multiplier? They are basically used to find the maximum or minimum of a function when there are constraints, right? Used to find the maximum or minimum of a function when there are conditions, you can say, or constraints, right? So एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर हम किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करेंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और द लॉस, तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर रही हूँ, ठीक है. तो उसको बेसिकली फाइंड करने के लिए वी यूज़ लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स, ठीक है. अब इसके पीछे का बेसिक आइडिया क्या है? द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट इज़, firstly, when you want to maximize or minimize a function, take for example, I am having a function here f of x comma y. When you want to maximize or minimize this function while keeping within a certain boundary, okay, this is a function, ठीक है. मुझे इसको मिनिमाइज़ करना है या मैक्सिमाइज़ करना है अकॉर्डिंगली जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है. और यहाँ पर मेरे पास एक सर्टेन बाउंड्री है और यू कैन से कॉन्स्ट्रेंट है जिसको मैं डिफाइन करूँगी बाय g ऑफ x कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 के साथ, ठीक है. व्हेन आई हैव दिस फंक्शन एंड दिस constraints, then I can use this method where I'm combining the function with the constraint, and thus I'll find the optimal solution, ठीक है. अब बेसिकली इसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, राइट. वेन एवर आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द solution for the optimal solution for the function, I have a defined formula. What is the formula for it? Simply the formula is defined as x comma y comma lambda. Lambda यहाँ पर क्या है? I'll explain it briefly. Equals to f of x comma y minus lambda into g of x comma y. Here I have already explained you f of x comma y क्या है, यहाँ पर function है, and g of x comma y क्या है? Constraint है, ठीक है. So I'll use this formula in order to set up my Lagrangian. What is Lagrangian, where it is used, how it is used, I'll explain it briefly. Okay, अभी के लिए you should know this is my formula. Okay, we'll be using it in our upcoming question, numerical question, right? So अब हमें पता लग गया Lagrange multiplier होता क्या है. Okay, what is the basic ideology behind it? Now we'll see several steps which can be used in order to solve our Lagrangian multiplier, right? So the first step is to set up a problem, right? For example, I have been given a basic function f of x comma y, so I'll just set up my Lagrangian. So first is set up Lagrangian by using this formula, okay. Secondly, take the
derivatives. Okay, you have to take derivatives. डेरिवेटिव्स किसके लेने हैं आपको? यहाँ पर आपको जो डेरिवेटिव लेने हैं ना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विच हैव बीन गिवन टू यू, आपको वो लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड लैम्डा. ठीक है, एंड वी हैव टू सेट each equal to 0. For example, in the first case, when you will take the derivative with respect to x, okay, so here what we'll do, you'll just take the derivative equals to 0. Okay, in the second, you'll take with respect to y, so you'll set the derivative equal to 0. Similarly, with respect to lambda, right? So for lambda, you'll set is equal to 0. तो इन तीनों की हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे, देन वील इक्वलाइज आवर इक्वेशन, राइट. कैसे करेंगे? आई विल शो यू इन द न्यूमेरिकल इटसेल्फ. सो पहला स्टेप था, वील सेट अप द लैग्रेंजियन. सेकेंडली, वील फाइंड द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड लैम्डा, एंड वील सेट ईच इक्वल टू 0, राइट. उसके बाद हम क्या करेंगे? वील सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. अब यहाँ से हमें जो इक्वेशंस मिलेंगी, तीन इक्वेशंस मिलेंगे, राइट. उसको हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में वील जस्ट solve the equations. ठीक है, and then in the last step, in the fourth step, you will find your optimal value. All right. ठीक है, so these are the basic steps which you need to follow for finding the optimal solution. अब इसका use कहाँ कहाँ होता है? If I have to talk about its applications, it has its vast application in the domain of firstly economics. जितने भी मैंने आपको अभी तक कराए सब में इकोनॉमिक्स तो कॉमन आ ही रहा है, राइट. सेकंड इज़ इंजीनियरिंग. ऑब्वियसली यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, सो इंजीनियरिंग में तो यूज़ हो ही रहा है. thirdly, machine learning. All right, and एक और है, that is physics. ठीक है, so these are its various applications. So in the next upcoming video I'll be sharing the numerical, so make sure you watch that video also. Till then, just revise the concepts, and if you have any doubt regarding the concept, you can just directly comment down in the comment section.